Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. मैं हूँ Kasha Shoaib, and for today's interview, we have the two very talented individuals with us. First, Dr. Tahir Mumtaz Awan, who is the director of China Study Center in Comsats University. Second, we have Dr. Jabir Hussain Sayed, who is the assistant professor in the Department of Meteorology, Comsats University. Assalamu alaikum, sir. How are you both? Walaikum assalam ji. Thank you very much. We both are fine. Thank you so much. We are fine. It's a pleasure to have you both, sir. Acha, to sir, we'll start with each one of you can start telling me about your educational careers and your prior experiences and what you are currently working on. Uh, my name is Dr. Jabir Hussain Sayed. I have a PhD in environmental studies from Qaid University, Islamabad. After doing my PhD, I worked with Chinese Academy of Sciences for 4 years as a postdoctoral researcher. Then I have another postdoctoral experience in Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong. So in 2017, I have joined as assistant professor in Comstats University, Islamabad, in the Department of Meteorology. Actually, my PhD and my research work is mainly like targeting some of the environmental contaminants and environmental pollution and its impacts on human health. Secondly, my core area of research is I'm focusing on the air pollution with respect to some of the hazardous chemicals and some of the hazardous waste which are affecting the air pollution. And with respect to e-waste, which we usually call as electrical or electronics waste, basically I'm working on e-waste since 2013 with my colleagues from Qaid University and colleagues from the Chinese Academy of Sciences. तो वहाँ पे जो है वो हमने चाइना में इसमें बहुत ज़्यादा काम किया because China is very well known for the recycling of e-waste in the world. And they have some largest e-waste recycling thermal sites in China. And after moving to Pakistan, I started working on e-waste in Pakistan. We have done many research studies on the electronics waste. We have identified some of the hotspots, some of the informal recycling sites, and currently we are working on my students, my research group, which is named as Environmental and Air Quality Research Group at Department of Meteorology on the emissions, on the hazardous emissions or the chemical emissions from the e-waste informal. So currently we are working, I mean, my research group, Environmental and Air Quality Research Group in Department of Meteorology on the atmospheric emissions which are related to the informal e-waste recycling sites. And at the moment, I have also two funded projects. One is basically related to the specific chemicals, hazardous chemicals related to the e-waste. And this project is funded by this is a bilateral project basically. So it is funded by the Pakistan Science Foundation, PSF, and one of research organization in Turkey. It's a well-known organization. It's Cubitek. So we are working on the emissions related to the e-waste recycling sites both in Pakistan and Thailand. So few of my students they are working with the professor of Tarihan in Bursa Technical University on the same project, and we are also collaborating with the Lancaster University on the same project. The second project is related to the plastic waste, and I'm working with the Andro Foundation Pakistan. And basically, just to summarize it in one line, that we are trying to develop the capacity of some of the government organizations which are working on the plastic or which are working on the plastic waste related to the some of the international convention. It's known as Basel Convention, and it's related to the implementation of the like plastic waste को आपने कैसे control कर. So I think this is my brief introduction. Thank you so much. Thank you very much for today's
initiative for this interview. And unlike Dr. Jabir, I am not that much scientific. I am more of a behavioral scientist, you can say, behavioral researcher. Uh, I currently have two responsibilities on my in Comstats University. One is this China Study Center. I'm the director for that China Study Center, and the second one is my job as a professor in the Department of Management Sciences. So I teach and I also look after this think tank. Mainly, all of these, like Professor Jaber, we have people who need the dissemination thing. So they are doing some scientific work and they are still working on, or they are still looking for some persons who can do their uh, their dissemination thing. So I'm that behavioral side on that what Dr. just said, community development or community um, training side, and then all that dissemination factors. I'm doing that. I'm in academia for last about 15 years. I'm affiliated with Comstats University. I did my doctorate from China. I mean, we were together in China also for quite a long time. And basically, my specialization is in marketing. My previous degrees are in mass communication and journalism, in technology management, and by profession, by first degree, I'm a computer engineer. So it is a combination of technology and behavioral side. Okay. Regarding the projects that Dr. Sabha just mentioning, we are working together on this e-waste side or electronic waste side. It is one of the emerging issues. I believe many people, many of us will uh, will accept this thing that we at least we have one or two mobile phones that are not in use in our drawers at office or at home. At least we'll be having one refrigerator or one oven, microwave oven that is not working but still kept in our houses. And our mothers are usually very touchy about these products. They don't want those products to be disposed of, and also we also don't care that why it is only taking. This is what I am quoting my mother also कि बेटा तुम्हें क्या कह रही है कि इतनी सी जगह ले रही है ना तुम्हारे पास इतनी सी जगह पे ये रखी है तुम्हें क्या तकलीफ देगी. वो जो असल वहां पर जो इशू है शायद हमसे पहली वाली जनरेशन ने ये इशू जो है उसको रियलाइज नहीं किया. बट दिस इज द टाइम वी हैव टू रियलाइज दैट द emissions, the radiations, again the negative factors, I would say those negative factors are harming ourselves, our children, our parents, and the society as well. So, जहाँ पे हमें बाहर solid waste नजर आता है, जहाँ पे हमें वो कूड़ा नजर आता है, वहाँ पे ये electronic waste भी उसी तरह से hazardous. And we together are working on these issues. Dr. Saab has mashallah done the scientific side, and I'm helping him out in the behavioral aspects or in the consumer side, in fact, which is my specialization also. I published few of the papers in the joint domain also, and in my core area, behavioral sciences also, the intentions, the purchase intentions, the green behavior aspects. So these are a few of the areas that I'm focusing on. And I believe if we look into the future, this electronic waste will become one of the emerging issues because many developed countries, they are banning that electronic waste, and people, they are finding the appropriate ways to dispose of these waste, these electronic waste along with the solid waste. So this is all about me. Thank you very much once again. अच्छा सर, तो moving on to e-waste policy management जो आपने ये पूरी that you've come up with, sir, तो ये initiative is basically solely dependent on creating awareness, or like it is like a whole platform where you have people working for you, या कोई ऐसी ये initiative है? जी डॉक्टर साहब इस पे मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे. बट मैं रिसेंट हमारा जो एक इनिशिएटिव था, I would first like to talk about that. We are having policies, I can say,
Okay. of, if we talk about the Environmental Protection Agency. So in EPA, I'll call it EPA. EPA is having the policy, the law, the regulations. The problem is that we do have to contribute, being in academics, being the consultants at various projects. We have a responsibility to contribute to improve that policy, to improve that regulations or laws. So recently we had an initiative. In fact, yesterday we organized a policy conclave on e-waste management, where on one platform we were having Ministry of Climate Change also. We invited EPA, but somehow due to their personal commitments, they refused and they apologized. They didn't came. We had people from SDGs unit also, SDGs Academy से लोग हमारे पास थे, हमारे पास recyclers बैठे हुए थे, हमारे पास जो है वो लोग जो कि कंसल्टेंट्स रहे कुछ अरसा, जिन लोगों ने ई वेस्ट पे बहुत पिछले कुछ 20-25 साल से काम कर रहे हैं या वेस्ट मैनेजमेंट पे जनरली काम कर रहे हैं. तो it was a group of about 22-23 people. So we deliberated for about 3 hours. We had that roundtable discussion, and the purpose was to bring a policy document which inshallah by कल हमारी वो policy conclave हुआ है, तो हम inshallah by tomorrow evening we'll be publishing that document in on our websites also. That is the initiative. That is the responsibility that being academicians, being the researchers we have, and again, implementation or adoption of that policy is the government side. We cannot force government. We cannot ask them to compulsory these all recommendations. But still, that document will be on record, and it will be a good list of suggestions for the people. So these kind of initiatives, again, on the scientific side and on the behavioral side, both are needed. So Doctor might want to add something about the scientific side also. So please. Thank you so much. I think regarding the policy side, I'm the member of United Nations Environmental Assembly for the Science Policy Forum on Chemicals and Waste. So actually, I'm working because I didn't mention in my introduction, like I was working as a consultant with the UNDP and Ministry of Climate Change, and that project actually was related to these chemicals. तो उसमें जो है वो we have conducted 2 consultative meetings on the e-waste policy or the management side with the Ministry of Climate Change. And currently, Pakistan has, our cabinet has approved chemical policy of Pakistan. And I was one of the lead author of that policy document. So for the last few years, I'm trying to collaborate. I'm trying to engage the academia work. I mean, what we are working on the research things in the universities, and I'm trying to connect with the Ministry of Climate Change, with some of the international NGOs, like UN organizations, like currently UNIDO. They are also working on the e-waste management. Even some of the World Bank projects, they are trying to do something on the policy side. So this policy conclave, which we have organized yesterday in Comstats University, actually the main purpose of this conclave was to share our results, I mean our research findings of my PSF Tech project with some of the stakeholders, I mean recycler, the people from ministry, the people from NGOs, the people from this society. I mean, the people who are working as the volunteers in the community for the awareness of this emerging issue. So I hope कि इस तरह के जितने भी events हैं, इस तरह की जितनी भी activities है, it will help कि जो आपका knowledge transfer है, actually we are making it possible transfer this knowledge, or you can say कि जो हम research कर रहे हैं, we want
to see it into the policy documents. And at the end of the day, the major purpose is to implement that policy or that rules and regulations. We have hazardous waste policy since 2005. And Ministry of Climate Change, at that time, it was Ministry of Environment. They have approved a program in 2001. I think they have started to work on this National Environmental Action Plan. That hazardous waste was also part of that program. So, in conclusion, I must say that हम ये जो साइंस और पॉलिसी फोरम्स हैं और फिर जिस डॉक्टर साहब ने ईपीएस की बात की फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस बिकॉज वी आर फेसिंग टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट तो इस हवाले से इट वुड बी वेरी हेल्पफुल So, sir, what advice would you give to the youth of Pakistan? देखिए जी, यूथ अगर हम ये कहें तो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी जो यूथ है, वी कॉल देम द टेक्नोलॉजी नेटिव्स। जबकि हम लोग अगर अपने आप को काउंट करें, शायद आप भी टेक्नोलॉजी नेटिव्स में आती हो, लेकिन हम अगर अपने आप को एटलीस्ट मैं अपने आप को काउंट करूं तो वी आर टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट्स। हमें टेक्नोलॉजी जो है हमें अपनी सेकंड फेज में मिली है। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में टिल मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना पहला कंप्यूटर जो है वो 1999 में खरीदा था। एट दैट टाइम द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्रोसेसर वाज 733 मेगाहर्ट्ज। अब आपका जो अगर ये फोन आप उठा के देखें तो इस फोन में आपके गीगाहर्ट्ज के आपके मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, आपके 8-8 10-10 प्रोसेसर कितने से फोन में लगे हुए। So that is why I call myself, I include myself in the technology immigrants category. तो अभी वाली जनरेशन को इन सब चीजों की यूजेज की आदत थोड़ी सी ज्यादा है। हम में से बहुत कम लोग होंगे, अगर मैं यूथ की बात करूं, कि जिनको अपने आई डाउट कि अपने मदर और फादर दोनों का नंबर जुबानी याद है। शायद मदर फादर में से किसी एक का नंबर याद हो, लेकिन दोनों का नंबर पॉसिबल नहीं है। चले उनका अगर याद होगा तो सारे बहन भाइयों का नंबर जुबानी याद नहीं होगा, वो सेव किया हुआ है। जी बिल्कुल। अकाउंट नंबर्स हमें याद नहीं होते। हमें मुझे भी याद है कि माय फादर यूज्ड टू राइट हिज अकाउंट नंबर ऑन द डिपॉजिट स्लिप। जो बैंक में जाके आपने जमा करवानी है तो वो जुबानी अपना नंबर लिखते थे, मुझे जाके अपना फोन खोलना पड़ता है। तो हमें वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज जो हैं वो शायद भी बढ़ गई, डिपेंडेंसी भी हमारी बढ़ गई है इन चीजों पे। That is the thing which I was about to say कि हमारी अब उन मशीन्स के बगैर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि लाइफ शायद पॉसिबल नहीं है। और मुझे शायर का नाम भूल गया, लेकिन एक बहुत अच्छा शेर है जो कि मैंने अपने कॉलेज के जमाने में कहा था कि इनफैक्ट पढ़ा था एक जगह पे एक डिबेट करते हुए कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। उसका एक ही मिसरा अभी मुझे इस वक्त फौरन से जहन में आया। तो एक तरह से ये दिल की मौत हो चुकी है। तो हमें वो थोड़ा सा रियलाइज कराना पड़ेगा अपनी यूथ को। हमें ये उन्हें बताना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज हैजार्डस। सेकेंडली, you have to be careful about the usage. Third, you have to be careful about the afterlife of this mobile phone. एक बच्चा अगर हमारा एक यूथ जो है हमारी आजकल अगर फोन इस्तेमाल करिए तो उसकी लाइफ 6-8 महीने 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद और मैक्सिमम ऑफ 2 years उसके बाद उसे फोन चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह ये नहीं कि वो बच्चा फोन खराब कर देता है, उसकी वजह ये कि कंपनीज ने ऐसे अपडेट्स के अंदर ऐसे उन्होंने प्रोग्राम्स, ऐसे उन्होंने कोड्स जो हैं वो डाल के भेजे हैं कि आपको उस फोन से शिकायत होना शुरू हो जाएगी। ये फोन मेरा स्लो हो गया, ये फोन मेरा बार बार क्रैश कर जाता है, मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है। तो दिस इज हाउ द कंपनीज आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दिस इज हाउ द कंपनीज आर मेकिंग बिजनेस। सो हमने उनके बिजनेस के साथ साथ अपने आप का भी ख्याल रखा। तो एक अवेयरनेस। दूसरी चीज ये कि अगर कंपनीज जैसे उनकी पॉलिसी है, एप्पल की एक पॉलिसी है कि जी वो आप जाके बहुत से मुल्कों में ऐसा करते भी हैं कि आप रिसाइकलिंग में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। आप अपना पुराना फोन उन्हें वापस करें, कुछ पैसे दें और नया फोन खरीदें। इसी तरह
हमें भी कुछ पॉलिसी ऐसी तरह पॉलिसी कह रहा हूँ सॉरी, हमें भी कुछ ऐसी अवेयरनेस इस यूथ को देनी पड़ेगी कि आपने इन चीजों को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है और आपने इन चीजों को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है। हमें हेल्थ की एप्लीकेशन सिर्फ इंस्टॉल कर देना अपने फोन के अंदर, अपने फुट स्टेप्स को मेजर कर लेना कि जी आज मैं दिन में इतना चलाऊं, इट इज नॉट इनफ। बट ऑल दोज इनविजिबल पार्ट्स जिसको हम रेडिएशंस कह रहे हैं उन पार्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो यूथ को इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अवेयरनेस की ही जरूरत है। वो अवेयरनेस में हमें मुख्तलिफ तरीके से हम उन्हें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि यू कांट ट्रेन द टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है। यू नीड टू ट्रेन यूर यूथ। जो आप इन्होंने काफी प्रॉब्लम, यस, द टेक्नोलॉजी नेटिव्स। उसके लिए क्या है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट, छोटा सा बच्चा है, उसके पास फोन भी है, उसके पास टैब भी है, उसके पास वॉच भी है, उसके पास लैपटॉप भी है। तो बेसिकली वी नीड टू ट्रेन देम, वी नीड टू एजुकेट देम एट प्राइमरी लेवल. So you have to, like I must say, you need to educate them in the schools. You need to introduce this important subject. I mean, as a part of environmental sciences subject at the primary school, and then waste, solid waste, and then e-waste. I remember when I joined Comstat University in 2017, and I have given a seminar on the same topic, emerging issue of e-waste in Pakistan. And before starting my presentation, I have just asked one question from the audience, and 80% of the audience were the students, I mean the youth. तो मैंने उनसे पूछा कि who heard about the e-waste in your life? बहुत सारे लोगों से, मतलब इंटरनेशनली तो लोगों को पता है, तो बहुत सारों ने कहा कि वी डोंट नो, इवन 90% दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम तो सॉलिड वेस्ट, हम तो प्लास्टिक वेस्ट, हम तो अपने म्यूनिसिपल वेस्ट, हम तो अपने घरों के वेस्ट, गलियों के वेस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अवेयरनेस होने के बावजूद भी। बट जो ई वेस्ट की बात है, ई वेस्ट का तो अभी पता ही नहीं है। तो यूथ के हवाले से, यूथ को कभी भी जो है वो, जब तक आप उनको आप उनके बिहेवियर में ये चीज नहीं लेके आएंगे, और secondly, it's the major responsibility of the manufacturer as well. Like different telecommunication companies, they are working. मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वो इस चीज पे जो है अभी उस पे एप्पल नहीं मान रहा कि they should have a single charging cable for all the mobiles. अब आप देखें, हमारे घरों, हमारे पास हर बंदे के पास अगर 2-3 मोबाइल फोन है तो हमारे पास 3-4 केबल्स तो है ही है। ठीक है, तो एक ही केबल हो, उससे आपका लैपटॉप भी चार्ज हो, उसका आपका मोबाइल फोन भी चार्ज हो, उसका आपका टैबलेट भी यूज हो। सो हाउ, लाइक by adopting these methods, by doing these things, I think we can control the e-waste, we can reduce the e-waste, and we need to educate our youth. Otherwise, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जो है जो जैसे आपने एग्जांपल दी, सॉरी टू कट यू, आपने एग्जांपल दी, तो इसका चैलेंज भी तो हो सकता है कि एक खराब हुआ तो फिर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही चलेगा, फिर क्या करेंगे सर? सॉरी, मैंने कहा एक चार्जर खराब हुआ, आप कह रहे हैं ना कि सारी चीजें उसी से वो रख ले, बजाय 10-12-15 चार्जर होने के घर पे। ठीक है, आपके पास एक अल्टरनेटिव हो, बट इट शुड बी द सेम। ठीक है, और डेफिनेटली जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तो उन पे टैक्स नहीं होता, रिसाइकलिंग टैक्स, बट इंटरनेशनली दे आर पेइंग। Like we are also trying to introduce this concept in Pakistan, the eco-fee concept, the payback concept. If you want to change your mobile device, your TV, your refrigerator, after 5 years, you just give your second-hand equipment, or you can say mobile phone, your refrigerator, to the same company. तो वो उसको एक अमाउंट आपको उसके अगेंस्ट देनी पड़ेगी, तो वो आपको न्यू वन दे देगी। Then it will encourage the recycling at the manufacturer level. ठीक है, so you don't need to throw them in the streets, you don't need to throw them in the solid waste.
as actually the main challenge in Pakistan related to the e-waste that we don't have any waste segregation system. आप घर में उसी में आपका फूड वेस्ट जा रहा है, उसी में आपका ग्लास जा रहा है, उसी में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहा है, उसी में आपका किचन का वेस्ट जा रहा है. मतलब हम सारा एक बार हमारा स्वीपर, इवन अगर आप डस्टबिन एक दो तीन चार अपनी गलियों में रखवा भी दे, हमारे स्वीपर्स दे आर नॉट इवन एजुकेटेड इनफ कि वो सबको मिक्स करके एक ही उसमें डाल दे. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है. और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो सबसे जो मेजर चैलेंज है, 60% और 70% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बाय वेट, आई एम टॉकिंग बाय वेट, दे आर एक्चुअली प्लास्टिक. इसको फ्लेम रिटार्डेंट कहते हैं, ठीक है, टू अवॉइड द फ्लेमेटरी इफेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उनके में एबिलिटी होती है कि वो क्विकली जो है वो फ्लेम को कैच कर लेते हैं. ठीक है, once we burn them in our landfill sites, we burn them in our like informal recycling sites to extract some precious metals from these devices. तो वो आपकी डायरेक्ट एनवायरमेंट में जाती है, आपका एयर भी कंटेमिनेट होगी, आपकी सॉइल में भी लीचिंग की फॉर्म में चला जाएगा, एंड द मेजर पार्ट इज योर वाटर रिसोर्सेज. तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट वाटर क्वालिटी एज वेल. तो मेजर चैलेंज यही है कि वी नीड टू अवेयर और वी नीड टू इंट्रोड्यूस द सेग्रीगेशन मैकेनिज्म इन पाकिस्तान. हर बंदे को बताओ कि फूड वेस्ट का एक अलग रिसाइकलिंग प्लांट है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जी जी सर. with reference to your magazine also, Startup Insider जो है आपका एफिलिएटेड मैगजीन है, तो वो एक मिसाल मेरे जहन में आई कि अभी हम आज सुबह की मैं खबर पढ़ रहा था कि एक एंटरप्रेन्योरियल मतलब सीरीज ऑफ बिजनेसेस चलाने वाले एक एंटरप्रेन्योर, आई एम सॉरी मैं नाम उनका भूल गया हूँ, बट ही इज वर्किंग इन अमेरिका, और उनकी एक सजेशन है कि जी पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने ऑफशोर ऑफिसेस खोलने की जरूरत है टू मेक इट विजिबल, मेक देयर बिजनेस. अब अगर वो ऑफशोर ऑफिसेस की बात करते हैं तो हमें स्टार्टअप्स में, हमें जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें पिछले 1 साल में 1.5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आई है. आपके अमेजोन के आपके जो फिगर्स हैं उनको आप देख लें कि अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले अमेजोन पाकिस्तान में आ रहा है, और पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या हो गई है अमेजोन में. इसको अगर मैं लिंक करूं हमारे आज के टॉपिक के साथ, तो मेरे पास एक मैसेज बड़ी फ्रीक्वेंटली आता है. मैं सर्विस का नाम नहीं लेता जी, अच्छा नहीं है किसी ब्रांड का नाम लेना, लेकिन जो मैं मोबाइल सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको ये देखना चाहिए कि एक मैसेज मुसलसल मेरे पास आ रहा है मुख्तलिफ नंबर से, अपना पुराना का एसी लेके आए और हमसे पैसे ले जाए. शायद आपके पास भी ये मैसेज. जी सर, ये तो आई थिंक यूनिवर्सल मैसेज है, सबके पास जाता है. ये यूनिवर्सल मैसेज अगर आप वो अपना पुराना विंडो एसी आप उनको देने के लिए जा रहे हैं, तो उस विंडो एसी में वी कॉमनली यूज अ टर्म, डॉक्टर साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, वी यूज अ वर्ड, अ स्लैंग इनफैक्ट, जिसको ई वेस्ट के हवाले से हमने पिछले दिनों यूज भी किया एक दो सेशंस में अपने, टर्निंग गार्बेज इनटू गोल्ड. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये हमें गार्बेज, हम इसको समझ रहे हैं क्योंकि हमारी अम्मी उस पुराने फ्रीजर को, पुराने फ्रिज को बेचने नहीं देती, लेकिन देयर इज गोल्ड इनसाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. जो आपके कंपोनेंट्स है उसके अंदर अगर उसकी प्रॉपरली, जो सेग्रीगेशन की डॉक्टर साहब ने बात की थी, अगर उसकी प्रॉपरली उसकी डिसमेंटलिंग हो, अगर उसको प्रॉपरली हम उसको रिसाइकिल करें, तो देयर आर गोल्ड रिजर्व्स इन इट. और इस चीज को फिगर्स में मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर आप 1 टन जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, जिसको हम प्रिंटेड कंप्यूटर्स या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हम कहते हैं, पीसीबीज कहते हैं,
तो 1 टन पीसीबी में से हमारे पास कितना गोल्ड निकलेगा? अराउंड 28 to 30 ग्राम। एंड आपके रियल गोल्ड। उसके बाद आपका जो प्लास्टिक उस बोर्ड में यूज हो रहा है, जो भी इन्होंने बताया है कि वो फ्लेम रिटार्डेंट हो जाता है, उसकी वजह से कर सकते हैं। दिस इज नॉट नॉर्मल प्लास्टिक। जिस प्लास्टिक के बर्तन हमारे घरों में आ रहे हैं, ये वो प्लास्टिक नहीं है। ये वो प्लास्टिक है जो आपके हाई एंड टॉयज में यूज हो रहा है। ये वो प्लास्टिक है जो आपकी शायद गाड़ियों में यूज हो रहा है, बल्कि उससे अच्छी क्वालिटी के। तो ये प्लास्टिक आपके लिए बड़ी एक अच्छी रिसोर्स है। आप इसको रिसाइकिल करेंगे तो आप एक नई इंडस्ट्री चला सकते हैं। आप एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे रहे हैं। और आउट ऑफ नथिंग, हम ये नहीं कह सकते कि वो चीजें जो हमारे मुल्क में इलीगली आ रही हैं, एक हमारे पास कोई हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत हमें बेहतर करनी चाहिए कि जी इलीगल हमारे पास चीजें नहीं आनी चाहिए। वी डोंट हैव दैट मैकेनिज्म कि एक कंटेनर हमारे पास लैंड कर गया हमारे सी शोर पे और हम उसको कहें अच्छा जी हमें नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। आ गया, वो आ गया है, वो इलीगल है, तो हम उसको उसको बेटर यूटिलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। मेरी बात शायद किसी गवर्नमेंट एजेंसी अगर कोई सुने तो शायद उनको बुरी लगेगी, लेकिन चैनल को हम अगर ठीक नहीं कर पा रहे अभी फिलहाल करंट स्टेज पे, उसको अगर हम ठीक नहीं कर सकते, तो जो हमारे पास वो चीज आई है उसका उसका यूजेज, उसकी रिसाइकलिंग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। पिंडी में 2 मशहूर मार्केट्स हैं, जिन मार्केट्स में आप चले जाएं आपको डंप्स मिलेंगे दुकानों के अंदर उन्हीं इलीगल शिपमेंट्स के। आप लाहौर में अगर चले जाएं तो देयर इज अ वेरी बिग मार्केट, जहां पे आपको, ये मैं कंप्यूटर सर्किट बोर्ड्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। यस सर, मतलब आई वाज आस्किंग कि ये जो आपका विजन है, हाउ डू यू सी दिस, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी अवेयरनेस, अगर ये इस आज से हम दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं, तो ये द नेक्स्ट 5 years आप इसको कहाँ कहाँ देखते हैं? व्हाट इज द विजन के फॉर द नेक्स्ट 5 years? I think Ministry of Climate Change, they are actively working on this issue, and I hope that in next 5 years we will have some improved status of this issue in Pakistan. If they allow some of the licensed formal recycling plants in Pakistan, and they can work on the private and public partnership, because I observe same in China, like they have the villages of these e-waste recyclers, and they are working on the same spectrum like private public partnership. And I am hopeful कि ये जो issue है इस पे एक तो अवेयरनेस भी होगा, लोगों को पता भी चलेगा। And basically this is you can't say it waste, this is basically precious waste, and we can easily convert it into a business. And we are working on some of the investors, we are working some of the with some of the investors who are interested to invest in this business. And we have conducted various meetings with the Ministry of Climate Change to introduce a license policy for these recyclers, to provide some incentives for these recyclers. इनको जो है हम business, तो business के हवाले से we can learn a lot of money. Like we just mentioned that we can extract 28 gram of gold from 1 ton of printed circuit board. Apart from this, we can also extract around 500 gram of silver, more than 4 kg of copper, and much more kg of the plastic, which we can later convert into the different toys and something like this. तो ये एक बहुत, इससे आपकी job opportunities आएंगी. And recycling industry should be a frontline industry in Pakistan, because in 2019 China has banned all kind of scrap, all kind of second-hand equipment. So after China has banned, we, India, Bangladesh, we are the target of those recyclers. Because आपका वेस्ट से जितना भी वेस्ट आ रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारा हमारे इन 3-4 कंट्रीज में डंप हो रहा है. And the most important thing, we need to differentiate between the second-hand equipment and obsolete things. So जो हम इलीगल या लीगल चीजें लेके आ रहे हैं, so better it should be like screened
at the time of entry, like these are the second hand or obsolete. If these are second hand, definitely we can earn a lot, as mentioned by Dr. Tahir, कि हम उससे बहुत सारा अपना business generate कर सकते हैं. But if those are obsolete, then definitely it will be difficult to manage that kind of waste, that kind of hazardous material, and it will be directly affecting our environment and then health. Thank you so much. Acha ji, Dr. Sahab is more of a technical person. I am more of like business side. So 5 years target or 5 years, where do we see ourselves? So at least पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग का प्लांट, एक फॉर्मली एक ऐसा प्लांट इंट्रोड्यूस करना, एक ऐसा प्लांट लगाना. और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हमें इन्वेंट करना पड़ेगा, या हमें आप ये कह सकते हैं कि जिस चीज को हमें खुद से बनाना पड़ेगा, कोई हमें साइंटिस्ट हायर करने पड़ेंगे. दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी many countries are doing it. Many countries are having these electronic waste recycling or electronic waste management plants. So I believe in 5 years at least an operational plant which can take all of those things before we reach at a stage जहाँ पे इस वक्त सिंगापुर खड़ा है, जहाँ पे इस वक्त चाइना खड़ा है, जहाँ पे इस वक्त बाकी technologically advanced countries. I don't believe on the word developed. I believe on the word well managed and poorly managed. So we are a little bit poorly managed country, and those countries जिनका भी मैंने नाम नहीं है था, वो थोड़े से तरह they are well managed. तो जिस तरह से उन वेल मैनेज कंट्रीज ने इसको बैन किए, तो उस स्टेज तक पहुंचने तक हम एटलीस्ट इसकी रिसाइकलिंग को ज्यादा बेहतर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म नहीं होंगी जब हम इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बाहर दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में लाना जो है, वो अगर बैन कर भी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर भी यहाँ पे आएंगे. हमने रिसेंटली बाहर से फोन इंपोर्ट करना छोड़ दिया, पाकिस्तान में कंपनियों को कहा यहाँ पे फोन बनाए. तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम नहीं कर रहे, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ा रहे हैं, और आप बाहर से इलीगल इंपोर्ट बंद करेंगे. आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूजेज नहीं बढ़ाए, कम करेंगे. दैट इज व्हाई वी नीड दैट प्लांट एट एनी केस. So being in the behavioral side, the business side, or the being a you can say PhD in marketing, तो marketing aspects से यही नजर आता है कि this is the waste turning into gold in future. So एक अच्छा प्लांट जो कि इस चीज को रिसाइकिल कर सके, और वो जो 58 ग्राम से 58 ग्राम 28 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो निकाल सके. तो 1 टन तो मेरे ख्याल है कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है. टेक्निकल साइड में डॉक्टर साहब हेल्प कर रहे होते हैं, तो 1 टन पीसीबी लेके आना बहुत बड़ा मसला नहीं है. और गोल्ड जिस ऊपर जा रहा है, तो शायद कल को एक सब्सिडरी जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की गोल्ड भी हो सकती है. बिल्कुल. And just for your surprise, I want to share one thing, that China has extracted 1 ton gold in 1 year, 2017, from only electronic waste. Wow. और जो मेडल में, चाहे वो सिल्वर थे, चाहे वो गोल्ड थे, चाहे वो ब्रॉन्ज थे, in Japan Olympic in 2021, that those medals were all extracted from the electronics waste. So you can just imagine कि कहाँ पे जा रही है. जी सर. Thank you so much. I think we are done with the interview. Thank you so much for your time. आप दोनों का I'm sure आज काफी youngsters को बहुत inspiring outline मिली होगी from this whole experience and how everyone can play a part in making Pakistan a better place. That's all for today. Thank you everyone for watching. For more updates, you can sign up at startupinsider.info. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much.